Hi, this is Mohammed Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today I will discuss on line distance protection. Basically, we have used the line protection but distance protection for 220 kV and above system. So line का protection हम लोग कैसे देता हूँ, distance protection हम लोग किस principle के ऊपर करता हूँ and कौन जोन में एक ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ा आता है, किस जगह में फॉल्ट हुआ हम लोग कैसे निकलता हूँ. Today I will discuss on this. How distance protection relay is working and how we find the fault zone of any transmission line. किस जोन में फॉल्ट हुआ कैसे चेक करता हूं. Today I will discuss on this. So suppose this is a bus bar. So bus bar से जब लाइन निकलता है पहले एक आइसोलेटर, देन ब्रेकर, देन अगेन आइसोलेटर, देन सीटी, देन वेव ट्रैप रहता है, देन सीवीटी, देन एलए होके वो लाइन निकल जाता है. ये लाइन ए सबस्टेशन निकल के दूसरा कोई सबस्टेशन में जा रहा है तो उसके अंदर लाइन में कोई फॉल्ट होगा तो ये ब्रेकर को ट्रिप होना चाहिए. दिस ब्रेकर शुड बी ट्रिप. जनरली क्या होता है, जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले होता है, द डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो रिले होता है, दैट वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इंपीडेंस. दिस इज वन काइंड ऑफ इंपीडेंस रिले. इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड का ऊपर डिपेंड करके ऑपरेट होता है. सो कैसे? So we know impedance Z is equal to V by I. मतलब impedance होता है वोल्टेज एंड करंट का रेशियो. सो वोल्टेज का इनपुट हमको कहां से मिलेगा? सीबीटी से हमको रिले में वोल्टेज का इनपुट मिल गया. एंड करंट का इनपुट कहां मिलेगा हमको? सिटी. ये जो सिटी है, सिटी से हमको करंट का इनपुट मिलेगा. तो सिटी से करंट का इनपुट, दिस इज द रिले. तो रिले में हमको वोल्टेज एंड करंट का इनपुट मिल गया. एंड वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो है इसको कंटिन्यू मॉनिटर करता है दिस रिले. एंड ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका डिफरेंट जोन में ये जो इंपीडेंस का वैल्यू इंक्रीमेंट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा. तो रिले में जोन 1, जोन 2, जोन 3 करके तीनों 4 जोन में डिवाइड करके इसका इंपीडेंस वैल्यू को सेट किया जाता है. तो लाइन में कोई भी एक जगह में फॉल्ट हो गया, जब फॉल्ट होगा तो क्या होगा, करंट एनोनॉर्मल में इंक्रीज कर जाएगा. जब करंट इंक्रीज कर गया इंपीडेंस भी ड्रॉप हो जाएगा. ड्रॉप हो जाएगा तो रिले तुरंत ब्रेकर को कमांड देगा ट्रिप करने के लिए एंड ब्रेकर ये फीडर को ट्रिप करा देगा. सो रिले में जोन वाइज इंपीडेंस को सेट करा जाता है. जिस जोन में फॉल्ट होता है उसी जोन में करंट एनोर्मल इंक्रीज हो जाता है एंड इंपीडेंस का वैल्यू तुरंत डिक्रीज करता है. एंड रिले में इंपीडेंस का जो सेटिंग वैल्यू है उसके साथ ऑल टाइम लाइव सिस्टम का जो इंपीडेंस है उसको कंपेयर करता है. जब ये डिक्रीज करेगा, जब भी दोनों का अंदर डिफरेंस आ जाएगा, तुरंत सिग्नल भेजेगा ब्रेकर को एंड ब्रेकर विल ट्रिप द फीडर. सो दिस प्रिंसिपल में एक काम करता है. 220 kV का 400 kV का जो भी लाइन होता है ये एक सबस्टेशन से निकलता है दूसरा सबस्टेशन को निकलता है तीसरा सबस्टेशन से, ऐसे चलता रहता है. तो किस जोन में फॉल्ट हुआ वो कैसे हम लोग डिवाइड करूंगा एंड किस जोन में फॉल्ट में कौन ब्रेकर ऑपरेट होगा वो कैसे डिसाइड होता है. लेट कम टू इट. सो सपोज देयर इज 4 सबस्टेशन इन a grid. There is 4 substation A, B, C, D. So there should be a transmission line in between A and B. There should be a transmission line between B and C, and there should be a transmission line between C and D. And both sides there should be a breaker from outgoing substation to incoming substation. कोई भी फीडर का कोई भी सबस्टेशन से जब निकल रहा है उसमें एक ब्रेकर होता है एंड कोई भी सबस्टेशन जब एंटर होता है तब भी ब्रेकर होता है. सो सबस्टेशन ए से जो आउट हो रहे हैं there is a breaker number 1. Similarly, when it is entered to the substation B, there is a breaker 2. B सबस्टेशन से आउट हो रहा है there is a breaker 3. जब C सबस्टेशन में इन हो रहा है there is a breaker 4. जब C सबस्टेशन से आउट हो रहा है breaker 4 एंड जब D सबस्टेशन से इन हो रहा है breaker 5. So there is 1, 2, 3, 4, 5, 6 breaker. So when any fault will come between A and B, A सबस्टेशन एंड B सबस्टेशन के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो ब्रेकर 1 एंड 2 शुड बी ट्रिप. सबस्टेशन ए एंड बी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो ब्रेकर ए एंड ब्रेकर 2 शुड बी शिफ्ट. व्हेन देयर इज एनी फॉल्ट बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा देन ब्रेकर 3 एंड ब्रेकर 4 शुड बी ट्रिप. सिमिलरली व्हेन एनी फॉल्ट विल कम बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा देन ब्रेकर 5 एंड ब्रेकर 6 शुड बी ट्रिप. Suppose there is a fault in between substation C and D. Breaker 5 is not tripping. Then breaker 3 should be tripped
with some time delay. I'm repeating again. Suppose there is a fault in between C and D, breaker 5 is not tripped anyhow, then the breaker 3 should be tripped after some time delay. And again, due to some technical issue, suppose breaker 3 also not tripped. So breaker 1 should be tripped after some time delay. So breaker 5 का जो ट्रिपिंग टाइम था उसी टाइम से ब्रेकर 3 का जो ट्रिपिंग का टाइम होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा. सिमिलरली ब्रेकर 3 से जो ब्रेकर 1 का जो ट्रिपिंग टाइम होगा वो भी थोड़ा सा ज्यादा होगा. I mean T1 is more than T3 and T3 is more than T5. So I am coming how it is being done, how this zone is divided. For your better understanding, please go through the picture. Suppose one 400 kV line is coming from 400 kV Kolaghat to 400 kV Jirat, and the line distance is 130 km. So from 400 kV Kolaghat to 400 kV Jirat, there is a distance of 130 km. So zone 1 will be 80% of 130 km. That is 104 km. This is zone 1. That is 104 km. Zone 1. This was the line length and this is the time. I am coming time after this. Suppose this 400 kV Jirat substance से one line जा रहा है सुभाषग्राम. That distance is 80 km. And from Subhasgram to another line is going to Holdia, that is approx 89 km. So zone 2 distance will be minimum 1.2 into this line. मतलब 1.2 into 130 km. That is 156 km. So zone 2 will be 156 km. That is 104 km. That is 156 km. So the zone 2 will be 156 km. Zone 1 is 104 km. Zone 2 is 156 km. Zone 2 can be vary. The minimum length of the zone 2 is 156 km and the maximum length of the zone 2 should be the protected line length, that is 130 plus 50% of the shortened length of adjacent line. That is shortest length of the adjacent line is Jirat to Subhasgram, that is 80 km. So 50% of 80 km is 40 km is equal to 130 plus 40 is equal to 170 km. So you can maintain zone 2, the minimum line length should be 156 km or maximum should be 170 km. And what will be the zone 3? Zone 3 should be the protected line length, that is the line between Kolaghat to Jirat, that is 130 km, plus the adjacent longest line length, plus the adjacent longest line length. The adjacent longest line length is Bahrampur, that is 200 km. From Jirat to Bahrampur, that is 200 km. So protected line length plus adjacent longest line length, that is 200 km into 1.2. So this will be the zone 3. So zone 3 will be 396 km. So zone 1 will be 104 km, zone 2 will be 156 km and zone 3 will be 396 km. Now I am coming to the timer. So zone 1 में कोई भी फॉल्ट होगा, मतलब 104 किलोमीटर के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा, then it will be act as an instantaneous delay. There is no time delay. So time delay is 0. जब 80% जोन के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा, इसी जोन में कोई भी फॉल्ट हुआ, then this breaker should be tripped and through PLCC is giving the command to this breaker and this breaker also trip. So zone 1 में कोई भी फॉल्ट हो गया, ये ब्रेकर ट्रिप होगा and through PLCC व टेली प्रोडक्शन इस ब्रेकर को भी ट्रिप कराएगा and there is no time delay. So zone 2 मतलब 156 किलोमीटर के अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ, suppose the fault is arise in direction, so these breakers should be tripped and through PLCC this breaker is also tripped. But in case of any technical issue, this breaker is not tripped. So Turant this breaker, this 1 number breaker should be tripped and there is a time delay of 0.35 second to 0.5 second. So ये ब्रेकर टिप नहीं करेगा तो इस ब्रेकर टिप करेगा and there is a time delay
of 0.35 to 0.35 सेकेंड। एंड सपोज ए जोन के बाहर कोई, सपोज इस एरिया में कोई ट्रिप हुआ, तो फर्स्ट इधर का बेकार ट्रिप होना चाहिए विदाउट एनी टाइम डिले। ये डिले ट्रिप नहीं हुआ तो इसको ट्रिप होना चाहिए। ये ट्रिप होगा 0.35 to 0.55 सेकेंड टाइम डिले। एनी आउट टेक्निकल रीजन ये भी ट्रिप नहीं हुआ तो दिस वन नंबर ब्रेकर शुड बी ट्रिप एंड देयर इज ए टाइम डिले ऑफ 0.5 सेकेंड to 1 सेकेंड। So this is the operating principle of distance relay of forwarding protection. So I am summarizing all these things: the zone 1, zone 2 and zone 3. What should be the distance of zone 1? What should be the distance of zone 2? And what should be the distance of zone 3? And what should be the time delay? Zone 1 operation, zone 2 operation, zone 3. You go through this table and it will be clear. So till now what I have discussed regarding distance relay, all are for forwarding zone protection. Zone 1, zone 2 and zone 3 all are for forwarding zone protection. Apart from these three forwarding zone protection, there is also another one zone is protected to this distance relay, that's called reverse zone by R4. Reverse zone by R4 zone. The reverse zone by R4 zone also protected through this distance protection relay, and this is the backup protection of बस बार प्रोडक्शन। सो सपोज दिस इज ए बस बार से ए लाइन निकल गया, ए लाइन निकल गया, ए लाइन निकल गया, ए लाइन निकल गया। दिस इज द ब्रेकर, दिस इज द ब्रेकर, दिस इज द ब्रेकर, दिस इज द ब्रेकर एंड दिस इज द सिटी, दिस इज द सिटी, दिस इज द फ्री। तो टिल नाउ व्हाट हैव वी अंडरस्टैंड, कोई भी फॉल्ट सिटी के बाद होगा, कोई भी फॉल्ट सिटी के बाद होगा तो ब्रेकर को ट्रिप करेगा तो फॉरवर्ड जोन प्रोटेक्शन सिस्टम। सो सपोज एनी फॉल्ट इज ओकर आफ्टर सिटी, आफ्टर सिटी के बाद सपोज ईस्ट एरिया বা ईस्ट एरिया में कोई फॉल्ट हुआ, सो दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय डिस्टेंस रिले टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। आई मीन इफ एनी फॉल्ट occur फ्रॉम दिस सिटी आफ्टर दिस सिटी टू दिस जोन, सपोज दिस जोन में कोई फॉल्ट होगा तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन फॉरवर्ड जोन का जो सेटिंग है उसी सेटिंग से इसको ट्रिप नहीं करा जाएगा। तो इसको कौन ट्रिप करेगा? इसको ट्रिप करने के लिए हमारा सबस्टेशन में जो प्रोटेक्शन लिया जाता है दैट्स कॉल्ड बस बार प्रोटेक्शन सिस्टम। I am repeating again, that is protected by bus bar protection, bus bar differential protection relay 87B. But anyhow, bus bar protection relays fail to detect the system. When any fault occur in this zone, it should be operated, it should be protected by bus bar protection relay. But anyhow, for any technical reason, if bus bar protection is failed to detect the fault, then what happened? Then it will be detected by the reverse 4 zone protection of distance relay. The R4 zone of the distance relay, this fault will be detected. तो बस बार प्रोटेक्शन में क्या होता है, कोई भी एक जगह में फॉल्ट होता है तो इस ब्रेकर चारों ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। सिमिलरली हमारा जो R4 जोन सेटिंग रहता है फॉर इन डिस्टेंस रिले, वो क्या होता है 10% to 20% ऑफ द लाइन लेंथ। लाइन का जो लेंथ है ये लेंथ का 10% रिवर्स में, मतलब ऑपोजिट ऑफ लाइन साइड में 100 किलोमीटर का 10%, that is 10 किलोमीटर we have set as a reverse zone protection। एंड इसी जोन में कोई फॉल्ट होगा तो प्राइमरीली सिस्टम को ट्रिप कराएगा, प्राइमरीली सिस्टम को सेव रहेगा बस बार प्रोटेक्शन रिले। बट इन केस ऑफ बस बार प्रोटेक्शन इज नॉट ऑपरेटेड फॉर एनी टेक्निकल रीजन, दिस R4 जोन प्रोटेक्शन सेटिंग ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले विल वर्क विथ सम टाइम डिले। व्हाट इज द टाइम डिले? सो बस बार प्रोटेक्शन में हम लोग जो सेटिंग रखता हूं दैट इज 100 मिली सेकेंड और 0.1 सेकेंड। तो बस बार प्रोटेक्शन में हम लोग 0.1 सेकेंड व 100 मिली सेकेंड टाइम के अंदर ट्रिप होना चाहिए और ऑल ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। बट इन केस ऑफ ए फेल्ड हो गया तो कोई भी फीडर का कोई भी फीडर में जो रिवर्स फॉल्ट जो R4 जोन है, दिस जोन सेटिंग विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल बी ट्रिप्ड आफ्टर 0.350 सेकेंड। 350 मिली सेकेंड के बाद ये जोन ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा एंड 350 मिली सेकेंड के बाद ऑल दिस 4 ब्रेकर विल बी ट्रिप्ड। सो द रिवर्स जोन द R4 जोन ऑफ डिस्टेंस रिले इज वर्किंग mainly the backup of busbar protection of any EHV substation. When busbar protection relay is failed to operate after some time delay, the distance protection reverse zone setting is operated as a backup protection of busbar.